My name is Naila Batul. My dream is to become a doctor. My school name is Mashroom Public School, Hussein. I studying in class 5th. I like my school very much because every student are very hard working here. One thing is that in this area people follow their culture. A single woman, she can't move one region to another region. The second challenge is that early marriages. In this area people do early marriages, so that's the problem. And the third thing, financial support. خدا تحقيق جيك رغبات جيك يوني جوبو مستقبل بول يخمجيك ون يلا ميلي أتا مي أوت خدا يتيه أقبال توز دري يتيه شهادة كتون يلا ميلي أتا. Class 4 number 1. Yes, sir. Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, 7. इसकी वजह से वो क्या करते हैं, काट लेते हैं. काटने के बाद फिर उनकी ग्रैंडी टीथ होता है. दूसरे जानवरों की गोश्त. गोश्त. She is very talented and hard working girl. He come to school regularly. She cooperate with every student. I thought she has the qualities of doctors. She is very good student of my school. We make the future plannings of school with help of community members. They regularly come here, evaluate the school activities, student performance, and they appreciate us. We also cooperate with them. Naila Batul. Saima Masum. ये सोचती थी मैं मतलब अभी हम एक स्कूल का फीस ही नहीं दे सकते तो फिर आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सोचती थी, हमेशा यही सोचती थी. जब इकरा फ़न के हुआ तो फिर बहुत खुशी को उन्होंने मतलब सेशन में भी बताते थे कि आप लोग मेहनत करें, जहाँ आप लोगों का एम है वहाँ तक हम लेकर जाते हैं. ये बात मैं इस तरह कहते थे तो फिर मुझे बहुत खुशी होती थी. और मतलब एक तरफ घर में जो काम करते वो सारे मतलब इन तमाम कामों से मैं मतलब काम से भी फारिग और मतलब सारा टाइम काम के बजाय मैं पढ़ाई पर फोकस देने की मुझे टाइम मिला. और वहाँ पे मतलब आराम करने के टाइम भी नहीं मिलते थे जिस कारण में पहले बैठते हैं. अगर जितना हम पढ़ेंगे, अभी हमारे एम है कि मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती, तो उसमें मतलब जहाँ तक हमारे ले जाएँ तो इकरा फ़न की मतलब उस पर उम्मीद है कि ये आगे लेकर आगे तक लेने की. जनरल नहीं रहते अपने गाँव में मतलब रिश्तेदार जो बच्चे होते हैं उनको अपने घर लेके जाते हैं. और जितने अक्सर मैं गर्मियों में जाती 20 दिन के, इसी 20 दिन में मैं अपने जो रिश्तेदार के और गाँव के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर मिला के
उनको पढ़ाते हैं। और आप लोग मेहनत करते रहें तो हो जाएगा। मतलब अभी 5 तक यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को आगे मौका मिलेगा। इस तरह मैं उनको नसीहत करते, कोई मसला नहीं होगा। इस तरह की नसीहतें नहीं करते और उसके साथ साथ उनको पढ़ाते भी। Now people are realizing without girls' education, the society can't be changed. खुशी है मैं डॉक्टर नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनना बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्योंकि डॉक्टर भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं डॉक्टर So much has changed since 2015 when we first got our Dining for Women grant. We were really small back then. We just had a couple of rooms in our center, and we now are on multiple floors over 2 buildings, and we have a staff of around 30 people from the local community. What was so great about the Dining for Women funding was that it allowed us to do our very first program. It allowed us to begin training women on women's leadership principles and women's rights and human rights in general. We started with just a small group of women who had demonstrated leadership skills in our community, and we trained them actively over an extended period of time, and then they became facilitators to begin expanding that training to larger numbers of women. طرأ التغيير على حالتي النفسية، إنه أنا كنت دائما منفعلة، دائما عصبية. فدخولي هذه الدورة حسيت بتغيير جدا كبير، إنه خاصة على عائلتي، على المجتمع، التعامل مع الناس من حولي، خلاني أقدر إنه أثبت وجودي، إنه أتمكن، إنه أكتشف من قدراتي، إنه أقدر أساعد نفسي وعائلتي، إنه أكون أكثر قوية بالمجتمع، خاصة كوني امرأة وبمجتمع عربي مثل مجتمعنا. That work is still continuing today, and those very first training workshops that we held are now a core part of our programming. We've been able to expand to do much more through advocacy activities, as well as income generation, but also really focusing on girls. CRP is really unique in Jordan because we're one of the only organizations to be working on gender-based violence with men and boys. And this is really something that grew out of our work with Dining for Women. What's different now is that we have a real need to be able to bring on quality middle management that can ensure that this core programming will be able to be maintained and will be able to continue to grow and expand and serve more people. The other big challenge is that the crisis really isn't over. The media has moved on from the Syria crisis, but it's definitely not over. We have more challenges than we've ever had as funding has moved on and as new groups like Yemenis move into Jordan and are desperate to receive help. We're just so grateful to Dining for Women for providing us funds to make sure that we're able to keep doing this really important work.